So that was the teaser for all of you. Please help in welcoming the force, the team behind this movie and the teaser. Please put hands together for our esteemed guests with us. Get your hands together for them. The team, the force, the actors. Get your hands together, everyone together. I would request our esteemed guests to kindly please be seated. Who has been really a legendary director, producer, who has given us immense number of movies which are hit and has let us live the life film size. Please help me in welcoming stage Mr. Karan Johar. Sir, can you say, please give him a huge round of applause, everyone. Welcome, sir. Namaskar. Pehle on behalf of Cape of Good Hope, Leo Media Collective and Dharma Productions की तरफ से हम सभी दिल्ली और पंजाब की मीडिया भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो आप देखने जा रहे हैं वो हमारे लिए फिल्म से ज़्यादा, कहानी से ज़्यादा दिल के बहुत करीब है, कि इमोशनल है, जो हम दर्शाने वाले हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन उस हत्याकांड के पीछे एक कहानी है जिसके बारे में आप नहीं जानते। हर जंग जो है वो रणभूमि में, युद्ध भूमि में नहीं लड़ी जाती। ये वो कहानी है, ये वो जंग है जो अदालत कक्ष में लड़ी गई थी, बाय अ ब्रेव मैन कॉल्ड शंकरन नायर। केरला के शंकरन नायर ने पंजाब के जलियांवाला बाग का सच दुनिया के सामने रखा। तो ये सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है, ये यूनिटी की कहानी है, देश की यूनिटी की कहानी है। और आज ये पहली पेशकश हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा ट्रेलर आज यहाँ दिल्ली शहर में लॉन्च हो रहा है और हम बहुत ही दिल से पूरे परिवार का स्वागत करते हैं, शंकर नायर का परिवार का स्वागत करते हैं। आज वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे साथ हैं और वाकई इनकी ब्लेसिंग्स के बगैर हम ये कहानी नहीं दर्शा पाते। बाकी सबके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप ये पहली पेशकश देखें। दिस इज केसरी चैप्टर 2, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी? वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायर। We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर he's a genius। और वो सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck.
Sir Shankar Nayak. An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn Amritsar down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The empire is shrinking. I think this calls out for a आपने second view. जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? They were terrorists. But they were still humans. उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक। We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck, Sir Shankar Nayak. An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn Amritsar down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The empire is shrinking. It's an honor to be here on this stage, standing next to you all. Thank you so much for your gracious presence. Thank you so very much. It's a great day, and I won't take much time. I won't be doing any Q&A with them, but I open the floor for all of you to ask questions. Kindly just raise your hand. We'll pass the mic to you. And I request all our media friends, do also let us know. On the mic. Hello.
Yeah. Hi, this is Sarika, editor Entertainment Money Control. Good afternoon to all of you. My first question is for Akshay Kumar. Hi, Akshay. This is Sarika from Money Control. So for the first time, we actually see you using the word fuck you. So what made you feel necessary? नमस्ते सब लोग जितने भी लोग आए हुए हैं हाँ मैंने ये वर्ड यूज़ किया कमाल की बात नहीं है देखिए मैडम आपने ये चीज़ देखी लेकिन वो जो वर्ड यूज़ किया था यू स्टिल अ स्लेव दैट वाज नॉट अ बिग गाली फॉर यू It was. आई थिंक उससे बड़ी गाली और कुछ नहीं हो सकती Yeah. So I think I would have been happy if you would have said कि they used the word slave Yeah. rather than you talking about fuck you because that was मेरे हिसाब से अगर ऐसे टाइम पे अगर उन्होंने गोली भी मार दी होती ना तो भी छोटा रहता ठीक है थैंक यू Thank you. Madhavan, my next question is for you. That after, Shaitan, you're again taking on a negative role in this one. So what made you say yes to this role again? Thank you for that question. When I choose to do a film, I look at the purpose behind why the film is being made. Most often than not, that will decide immediately what my decision is. This was Dharma with Karan Johar and Apurva making a film called Kesari Chapter 2 with Akshay sir and a director of mine who's also called Karan, who's a graduate, who's a law graduate from Harvard. And they've all gotten together to tell a story that has been it's just been a very irritating chapter for us when we were in school because we had to memorize what happened. Then slowly as we got older, we remembered कि यार ये बड़ा खराब हुआ. फिर हमें और जानकारी मिली, पिक्चरें देखे हमने, फिर लोगों से बातें की तो पता चला ये तो महाकांड है यार, ये तो अन्याय है. और जब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और जब मैंने ये फिल्म की, जो मुझे जानकारी मिली और जो मुझे पता चला, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जेनोसाइड कहूँगा मैं. ये तो मैसेकर भी नहीं है, तो जेनोसाइड है. और जो इसके लिए जिम्मेदार है वो कम से कम इसे ओन तो करे. तो मुझे लगा कि इससे अच्छी कहानी मेरे लिए नहीं हो सकती. मैं नहीं देखता हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, बस मेरे लिए एक किरदार हो और इसको इतने अच्छे से निभाऊँ कि लोग मुझे हेट करें. देन आई थिंक आई एम सक्सीडेड इन माय जॉब. Hello, all the respected. My question to Karan sir. Sir, that actual heinous Naskar is happened in 13th of April 1919 and your releasing date is very close. Only date is very close, 18th of April. So how you connect that day of Vaisakhi is this very auspicious day and on that day that heinous Naskar happened. How you connect all the negative vibes and positive moments? देखिए मैम, थैंक यू. जैसे कि आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था वो तब हुआ था. और बहुत लोग आई थिंक तब भी रिपोर्ट्स आए थे उसे खूनी बैसाखी के नाम से बुलाते थे. हाँ, बैसाखी सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो कोई सेलिब्रेशन नहीं था. वो दर्दनाक था, वो हत्याकांड था, वो जेनोसाइड था. और खुशी उस दिन तो कोई नहीं मना पाया, लेकिन हाँ उसके बाद सालों बाद वो दिन मनाया जाता है. लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना गम का है. ये फिल्म गुस्से से बनी, क्योंकि वो जवाब जो हमें बहुत सदियों से नहीं मिला उनसे, वो आज तक नहीं मिला. वो माफ़ी आज तक किसी ने नहीं मांगी. और हम इसीलिए इसी महीने ये फिल्म रिलीज करना चाहते थे, इन मेमोरी ऑफ दोज लाइव्स दैट वर लॉस्ट, इन मेमोरीज टू दोज वुंड्स दैट आर स्टिल रॉ, इन मेमोरी of the sadness that engulfs Jallianwala Bagh even today. This film is not a homage, it is not an honor, it is yet a film that asks the British Empire for an apology through the brave narrative of Shankaran Nair. Well, you'll have to watch the film to find out, but this film is about the battle fought by Shankaran Nair versus the Crown.
So I think that should answer your question about who is in the film and who's not. Thank you, ma'am. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਫਿਲਮ। ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਜਸਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਲੂ ਕਟਰੇ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ this is a very personal film and a very important film. ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਲੱਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਇਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਬੁਲੇਟਸ ਹੈਡ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। that much only we knew it. But the more deeper thing, we never knew about it. We never knew about the case which went on. Shankar Nair fought the case, the whole thing, how he fought it, and let me tell you one thing. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਜੱਜ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, 200 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਔਰ ਧਰਮਾ ਦਾ, ਕਰਨ ਜੋਹਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਰੇਵ, ਦ ਲਾਇਲ ਪੀਪਲ, ਦ ਵੈਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ 3 ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਕੇਸਰੀ 4 ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ I want to bring out the valor, the things which India does, have done it earlier, because which we don't know in our history books, it is not written, because ਸਾਡੀ history books ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਲੱਗ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 10-15 ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਇਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਸਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਡੀਟੇਲਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ,
पूरे इंडिया की कहानी है. That's why this becomes a very, very important and special film for not only me as a Sardar, but for me as an Indian to be part of.